resolving a conflict, climbing a mountain, making a personal decision with positive results. These are all coming under eustress or positive stress. So positive result can improve overall performance and lead to increase in self-confidence and self-esteem. Distress or bad stress describes pressure in school, work, social relationship, family, and the environment that are perceived as difficult or even insurmountable due to limited personal resources. Distress can have a negative effect on a person's physical and emotional state and may be manifested in a number of stress related symptoms. We are looking at such type of symptoms. It can be physical symptoms like muscle ache, headache, increased heart rate, then weight gain. I'm sorry, there's a spelling mistake here. WEIGHT, weight gain, constipation, dizziness, stomach cramp, टाइट चेस्ट, एग्जाम के बाद सुनने से किसी का पेट में दर्द शुरू शुरू हो जाता है. दैट इज योर फिजिकल रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रेस. कोई एक हायर ऑफिशियल को आप मीट करने जा रहे हो और यू आर गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन in front of a uh, spending more, nail biting, talking more. This can be the behavioral response to stress. Actually, here in the heading it is right. Responses to stress, they are actually divided into two very broad heads. मतलब जब सामने कुछ challenges आता है, दो ही काम हम लोग करते हैं, अलग अलग तरीका से करते हैं. तो एक है फाइट, मतलब सामने जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करो और फाइट करो उसके साथ. ये जो मतलब आपके अगेंस्ट में जो चीज है उसके साथ फाइट करो, या तो फ्लाइट, या तो वहां से भाग जाओ, सिचुएशन से भाग जाओ, अवॉइड करो. सो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज एक्चुअली divided into these two broad heads. But yes, there can be the physical, emotional, or behavioral response, as we have already discussed. Now, we have told that stress is not always bad. There can be eustress or there can be distress. I was actually speaking about distress, which can have a negative effect on a person. Like in the previous slide, we have seen physical and emotional state and may be manifested in a number of stress-related symptoms such as headache, stomachache, backache, restlessness, fatigue, difficulty in concentrating, irritability, muscle tension, sleep disturbance. Distress in highly individualized and depends on variables such as novelty, rate, कितना न्यू है, नया टाइप का चैलेंज तो डिस्ट्रेस हो गया, पुराना टाइप का चैलेंज, you are knowing what is expected of you, then it is your eustress. Rate, intensity, duration,
or personal interpretation of the input and genetic or experimental factors. Now, before we talk about the growth mindset, we will also talk about some myths about stress. According to American Psychological Association, stress is a part of our lives. We cannot live without stress. अगर जिंदगी है तो जिंदगी का चैलेंजेस रहेगा, जिंदगी का नीड्स रहेगा, मांगे रहेगी और उसको पूरा करना है, और पूरा करना है so there will be different responses in our physical stature, in our emotional status, in our behavioral status. So that will happen. You cannot avoid stress. So, but as much as we all live with it in today's world, there's not a single person who is without living without stress. Many of us misunderstand some of the basics about stress and its role in our lives. Why does this matter? Stress has been indicated in many research studies in exacerbating very real physical illness. Everything from heart disease to Alzheimer disease, reducing stress can not only help you feel better, but also to live longer, disease free life. Now, let us look at some common myths surrounding stress. There is one common myth that stress is the same for everybody. No, stress is not the same for everybody. Nor does everyone experience stress in the same way. Stress is different for each and every one of us. You can tell that stress is very exclusive. Stress is very unique for us. Stress is not the same for everyone. Okay. So, what is stressful for one person may or may not be stressful for another. Each of us responds to stress in an entirely different way. For instance, some people may get stressed out paying the monthly bills, paying the monthly bills every month, while for others, such a task is a common task, is a repeated task, and it is not stressful at all. Some get stressed out by high pressure at work, while others enjoy it and may thrive on it. They personally grow because of the stress in the workplace. Some get the myth number two, stress is always bad for you. No. According to this myth, zero stress makes us happy and healthy. But this is not true. This is wrong. Stress is to the human condition what tension is to the violin string. वायलिन या सितार अगर आप बजाते नहीं हो, अगर उसको स्ट्राइक नहीं करोगे तो वहां से सुर नहीं निकलेगा. ठीक है. एक बहुत फेमस सॉन्ग है, टेगोर सॉन्ग. ये बोल रहा है कि अगरबत्ती को आप अगर जलाते नहीं हो तो अगरबत्ती का सुंदर खुशबू आपको मिलता नहीं है. अगर आप दिया को नहीं जलाते हो तो दिया से रोशनी नहीं मिलता है. जिंदगी भी ऐसे ही है. अगर डिमांड नहीं रहेगा, अगर स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो आप क्या कर सकते सकते हो, कितना हद तक कर सकते हो और कितना ऊंचाई आप छू सकते हो, ये शायद आप कभी मतलब समझ ही नहीं पाओगे. सो स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड and a stress free life is not always happy. So what I was telling is stress is to the human condition what tension is to the violin string. Too little and the music is dull. Too much and the music is shrill. Or maybe the string snaps. So stress in and of itself is not bad. So while stress can be the kiss of death or the spice of life, the key is to understand how best to manage it, how to manage it efficiently. Managing stress makes us productive, makes us happy, while mismanaging it may hurt us and cause us to fail or become even more stressed. There is another myth that the stress is everywhere. So you cannot do anything about it. No, that is also a myth. So
is the possibility of getting into an automobile accident every time we get into our cars, but we don't allow that to stop us from driving. No, that cannot happen. That is actually a misconception. You can plan your life so that stress does not overwhelm you. Effective planning involves setting priorities, working on simple problems first, stepwise, solving them stepwise, and then going on to more complex difficulties. So, always in life, you should, for stress management also, you should move from simple to complex, from small to big. When stress is mismanaged, it is difficult to prioritize. All your problems seem to be equal and stress seems to be everywhere, but that is not the case. You have to have your priority list. किसको आपको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ करना है, किसको कम एंथुसियाज्म के साथ करना है, किसको बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए. Then there is a next myth where the most popular techniques for reducing stress are the best ones. No universally effective stress reduction technique exists. It is what works for you. What works for you may not work for me, or what works for me, we all are different. No, our lives are different, our situations are different, our reactions are also different. A comprehensive stress management program tailored to the individual works best. What I'm telling, जैसे आप दर्जी के पास जाते हो, अगर आप मार्केट से कुछ कॉमन साइज का आप कुछ भी ड्रेस खरीदते हो, तो कभी कभी वो ठीक से आपको सूट नहीं करते हैं, तो आपको टेलर के पास जाना पड़ता है, इधर से थोड़ा सा छट के, उधर से थोड़ा सा कट के, इसमें 2 इंच आगे करके, उसमें 2 इंच पीछे करके, उसको एक्सक्लूसिवली टेलर मेड आपके लिए करना होता है. तो ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक भी अलग अलग लोग के लिए अलग अलग है. So self-help books that can teach you many of the successful stress management technique can also be of great help as long as you stick to the program and practice the techniques daily. क्या आपके लिए काम करेगा, ये आप बेस्ट जज हो. Then the next myth is no symptom, no stress. अगर आपका कोई स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम नहीं है, इसका मतलब है आपका कोई स्ट्रेस नहीं है, ये नहीं है. And absence of symptom can also happen, and it does not mean the absence of stress. In fact, camouflaging symptoms with medication may deprive you of the signals you need for reducing the strain on your physiological and psychological system. Many of us experience symptoms of stress in a very, very physical way, even though stress is a psychological effect. But feeling anxious, shortness of breath, simply feeling run down all the time, these can also be physical signs of stress. बाहर से अगर साइन नहीं है, उसके बावजूद भी आपके अंदर बहुत स्ट्रेस हो सकता है. Feeling overwhelmed, disorganized, having difficulty concentrating, these are the common mental signs of stress. So only major symptoms of stress require attention. That is also not true. So minor symptoms like headaches, stomach acid reflux, they may be safely ignored, but minor symptoms of stress are the early warnings that your life is getting out of hand and you need to do a better job of managing stress. If you wait until you start feeling the major symptoms, then that will be too late. Those early warning signals are best listened to earlier rather than later. A change in lifestyle, such as exercising daily more to deal with those early warning signs, will be far less costly in terms of time, in terms of money, than dealing with the effects or not listening to them.
So now this slide is talking about the growth mindset. So people with a growth mindset believe that they can develop abilities through study and effort. Whereas persons with a fixed mindset consider themselves to have an innate ability that is static. तो दो तरह के इंसान होते हैं. एक सोचते हैं कि मेरे पास जो एबिलिटी है वो स्टैटिक है, वो स्थिर है, मैं उसको ग्रो नहीं कर सकती हूँ, उसको डेवलप नहीं कर सकती हूँ. इन दैट केस आपके ऊपर स्ट्रेस और ज्यादा होगा, बिकॉज जिंदगी का जो भी नीड है, उस मोमेंट का जो भी डिमांड है, आप उससे भागना चाहोगे, या तो आप बोलोगे कि मेरे से ये नहीं होने वाला है. तो ग्रोथ माइंडसेट अगर होता है, then you can experience actually what is called eustress or positive stress. So the Carol Dweck, a psychologist at Stanford University, proposed the fixed versus growth mindset theory, comparing the differences between growth and fixed mindset behavior and outlooks will help to understand what a growth mindset is. Individuals with a growth mindset often have a more positive outlook and are better at dealing with setbacks, or they are better to deal with stress because they accept the challenges and they want to grow with that. So this is actually telling what is growth mindset or what is fixed mindset. Growth mindset believes in freedom, or growth mindset itself is freedom. Those who are having growth mindset, they perseveres in the face of failure. They actually exert effort, and they know that effort is required to build new skills. They find inspiration in others' success, and they accept criticism. आप कब क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करोगे? दो तरह के इंसान होते हैं. एक को जब भी क्रिटिसिज्म मिलते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, या तो अवॉइड करते हैं उस सिचुएशन को. और दूसरे तरह का आदमी जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो सोचते हैं कि ये क्रिटिसिज्म के अंदर क्या सीखने का है, कहाँ मैं गलत गलत थी, कहाँ मैं अपने आप को और ग्रो करा सकूं, कहाँ मैं अपने आप को और डेवलप करा सकूं. एंड दे हैव द डिजायर टू लर्न. एंड इफ दिस टाइप ऑफ माइंडसेट इज देयर, if this type of growth mindset is there, then the person is not going to be badly affected by stress. But those who are having fixed mindset, who avoid challenge, who ignore feedback, who are threatened by others' success, दूसरे का सक्सेस होता है और वो दुखी हो जाते हैं. कब होता है? जब आपका फिक्स्ड माइंडसेट है. आप सोचते हो कि मेरा एबिलिटी ग्रो नहीं कर सकता है, सो दूसरा क्यों मेरे से अच्छा है. then that's a very fixed or negative mindset, and they desire to actually look smart, and they give up easily, and they believe that they are having fixed abilities. इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इंसान जो है वो स्ट्रेस को पॉजिटिवली ले नहीं सकते हैं, because they don't have faith in their own capabilities, and that's why they feel that I cannot grow, so the other person should also not grow, and they always feel threatened whenever there is a stress. So what is the significance of a growth mindset in education? It is more beneficial to praise students' efforts in education rather than their intelligence. सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है. किसी बच्चा को बोलना कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन जो बच्चा अपना लिमिटेड कैपेबिलिटी लेके भी कोशिश करते हैं,
और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सुलझाने का और डिफिकल्ट साम को सॉल्व करने का उनका ये जो हार्ड वर्क है या एफर्ट है, इसको हमेशा आप प्रेज करो एज अ टीचर, because when they are actually showing effort to do something new, when they are having any stress because of more difficult question or more difficult a mathematical problem, then if they don't challenge themselves or if they feel that I am not of this capability, then they can never grow. So you always, as a teacher, you have to praise students' efforts. Always tell that your effort is something very, very positive. The learners who are taught how to build their level of intelligence performed far better in education and demonstrated more motivation in the learning experience. So individuals with a growth mindset, they are more likely to become successful because they are ready to accept challenge. They feel that we can grow, and then they accept challenge with all positivity and they work hard on it. So there are many other benefits of acquiring growth mindset activities in education. Okay, let us go to the next one. So, what are the most effective strategies to foster a growth mindset? ये growth mindset teacher आपके अंदर होगा तभी आप दूसरे के अंदर ये फॉस्टर कर सकते हो, इंस्टील कर सकते हो, नर्चर कर सकते हो. So teachers need to demonstrate deliberate practice into their everyday classroom practices to help students develop a growth mindset. कैसे करेंगे? नया नया चैलेंजेस देंगे, नया काम देंगे, स्टीरियोटाइप को अवॉइड करने का कोशिश करेंगे. जैसे बुक में कोई एक क्वेश्चन है, एज अ टीचर इफ यू जस्ट कॉपी इट फ्रॉम समवेयर and then give it to your learners have already solved it. You are not giving them challenges, and if the challenges are not there, they will never grow. कभी देखे हो जो हाई जंप प्रैक्टिस करते हैं एथलीट्स, डेली उसके जो हाइट है वो हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं ताकि वो नया नया चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं. तो ग्रोथ माइंडसेट नर्चर करने का उपाय क्या है? टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, many of these methods can be easily applied in the existing classroom practice. कैसे? Engage students through challenges. Teachers can encourage their students' engagement with challenges by portraying easy tasks as boring and by portraying challenges as fun and exciting. क्लास में जब हम लोग हॉट क्वेश्चन लेके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, नए तरह तरह का क्वेश्चन देते हैं बच्चा को लाके और बोलते हैं चलो मजा आएगा, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, कोशिश करते हैं चलो टुगेदर whether we can solve it or not. So the learners will also feel that the new things, the more difficult things, they are more challenging and they are fun, and the easier tasks are boring. So, if you can develop this type of environment into your classroom, then that will nurture a growth mindset in your students. You can normalize struggle. Teachers may foster a growth mindset in children by demonstrating struggle as an essential component of the learning process. Struggle नहीं रहेगा, कोशिश नहीं रहेगा, नया चीज को एक्सेप्ट करना हम लोग नहीं जानेंगे, तब हम लोग के अंदर या हम लोग के लर्नर्स के अंदर ग्रोथ माइंडसेट कभी भी नर्चर नहीं हो सकेगा. Okay, so what is the lesson of this? That you means we or our learners, they have to stay positive. Staying positive in the classroom may help teachers to develop a growth mindset in children. बच्चा आपके पास एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके देते हैं और आप बोलते हो
गुस्सा हो जाते हो बिकॉज आप जानते हो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप कोशिश तो करके देखो। अब बच्चा को बोलो चलो हम दोनों मिलके कोशिश करें, because what is challenge for you, that may be a challenge for me, but let us practice, let us try it together. So जब आप पॉजिटिवली कोई चीज को एक्सेप्ट करते हो, पॉजिटिवली अपना चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हो, then only the learners will actually instill that, or in the learner's mindset this positive mindset will be nurtured. Indicate errors and celebrate corrections. जब भी करेक्शन आता है, सोचो कि आप कुछ पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के टाइम फ्लो में आप कुछ गलत बोल दिए हो, कुछ गलत आप स्पेलिंग लिख दिए हो, that error is pointed out by any of the students. There are teachers who will be angry. Never become angry. Whenever there is indication of an error, you celebrate the correction कि चलो हम भी सीख गए, आप भी सीख गए, हम भी सीख गए। गलत किए थे, गलत किसी से भी हो सकता है, लेकिन corrections are always to be celebrated. New learnings are always to be celebrated, and also new challenges are to be celebrated, because it's the challenges which makes you more capable. Highlight the significance of difficult task to the brain. आजकल तो मेडिकल साइंस भी बोलते हैं कि जैसे बूढ़े होने के साथ साथ ना, हम लोग बोलते हैं ना, ब्रेन भी काम नहीं करते हैं ठीक से, और हम लोग सोचने का जो क्षमता है उसको खो देते हैं, अल्जाइमर हो जाते हैं। इससे भी बचा जा सकता है इफ यू एक्सेप्ट न्यूअर चैलेंजेस टू योर ब्रेन। आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि डेली क्रॉसवर्ड पजल करो, डेली सुडोकू करो, डेली कुछ कुछ नया चीज नया चीज सीखो, नया चीज अपनाओ, नया चैलेंजेस को अपनाओ, देन बुढ़ापा आपसे दूर रहेगा। ठीक है? सो you have to refresh yourself with newer challenges, and always tell even your learners that new challenges are not only the causative factors of stress, but actually they help you to grow. Then set objectives. According to several growth mindset studies, having learners and employees set incremental attainable goals demonstrate the achievability of educational progress and career success. चाहे एजुकेशन हो, चाहे क्लासरूम का टीचिंग लर्निंग हो, या करियर का सक्सेस हो, अगर आज बैठकर आप सोचोगे कि कल मैं डायरेक्टर बन जाऊंगी, दैट विल बी डे ड्रीमिंग। अगर आप एक्चुअली कुछ करना चाहते हो, एक्चुअली ग्रो करना चाहते हो, तो ग्रोथ माइंडसेट स्टडीज में बोलते हैं कि आपका जो अल्टीमेट गोल है, इसको आप छोटा छोटा अटेनेबल गोल में आप डिवाइड करो। ओके, जस्ट मेरे जैसे जो ओबीज लोग हैं, जो सोचते हैं कि हाँ मुझे 25 किलो घटाना है, तो 25 किलो एक साथ अगर हम लोग सोचेंगे, विल बी अंडर स्ट्रेस। व्हाट वी शुड डू, दैट इन अ वीक वी कैन reduce by 1 kilo. Okay, so you have to set incremental attainable goals. What about group work? So, working in groups to perform tasks emphasize process and highlights the importance of seeking help to find a solution. जब ग्रुप में आप काम करते हो, ग्रुप वर्क में स्ट्रेस कम होता है, because उसमें we seek help from each other and finding a solution is the ultimate goal. This is a growth mindset intervention. Why? Because that reduces the importance of individual learning outcome. Okay. Now, again, we are coming back to offering challenge. An important aspect of building a growth mindset is to teach students to overcome barriers. Engaging students in complex academic tasks or teaching a difficult concept to children that may stretch their abilities can offer actual opportunities for growth and next level of instruction.
अगर मीडियोकर ही बन के रह जाओगे तो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है. You have to give newer challenges to your learners and also to yourself if you want to really grow. Okay. So the next thing is, I have already discussed this, why we shouldn't praise intelligence, but we should praise the hard work or the effort. Okay. Next is how we have to manage stress. Effort is the secret to getting smarter. Difficult and challenging tasks give the opportunity for growth, and mistakes are great opportunity actually to learn and grow. इधर देखो आप स्टेप्स दिखाया जा रहा है. तो पहला, कोई भी स्ट्रेस देखने से जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, पहले क्या बोलते हैं जो नेगेटिव माइंडसेट वाला, आई वोंट डू इट, हम करेंगे ही नहीं, वी विल फ्लाई अवे फ्रॉम द सिचुएशन, उधर रहेंगे ही नहीं, चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. You have to move to the second step where you are telling, okay, I know what it is, but maybe I can't do it. So they think that I am having fixed capability. The third step is great when we are seeing effort. There the learner or a human being is telling, I want to do it. कम से कम आपके अंदर वो चाहत तो रहे कि ये चैलेंज जो है उसको हम लोग फेस करके देखें. Then the next step is when the person wants to learn how do I do it, or he starts thinking कि कैसे करें, करना तो चाहता हूं लेकिन कैसे करें. And the next step is even greater, even better. I'll try to do it. So the effort starts. Then the next step, when the person says, I can do it, I will do it. And finally, the winning. Yes, I did it. And remember, as teachers or as human beings, when we move from the first tier to the last tier, actually we get the fun out of it and we feel that we are one of the greatest winner. Because कोई भी चैलेंज को ओवरकम करना, वो आपको जो सेटिस्फेक्शन देते हैं, जो सेल्फ अचीवमेंट का सेंस देते हैं, वो और किसी किसी तरीका से हो ही नहीं सकता है. जैसे उसी दिन कोई बच्चा के साथ मैं बात कर रही थी, एंड द लिटिल गर्ल वाज टेलिंग दैट आई डोंट लव मैथ्स. नाउ ऐसा बहुत सारा आपके पास लर्नर मिलेगा दैट आई डोंट लव मैथ्स. तो उसका क्या कारण है? जैसे ही मैथ्स देखते हैं, उस लर्नर के अंदर एक स्ट्रेस पैदा होते हैं, और स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वो फाइट नहीं करते हैं बट फ्लाइट का ऑप्शन अपनाते हैं. फ्लाइट मतलब वो भाग जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं. सो ये जो अवॉइड करने का सिचुएशन, उसको छोड़ के अगर फाइट करने का सिचुएशन में हम लोग आएंगे, then we will be winner and we will be better managers of stress. So a few mind shifting tips for cultivating a growth mindset at home. There are some tips given to you. You can go through it, but together we will move to the next slide, which is describing the learning peak. मतलब often जो नया नया तरह का प्रॉब्लम होता है या न्यू चैलेंजेस है, दे पोज देमसेल्व्स, दे एक्चुअली आर लाइक सम पीट्स और होल्स इन फ्रंट ऑफ अस. लगता है सामने गड्ढा है, ये गड्ढा को पार करना मेरे बस की बात नहीं है. लेकिन हु आर द विनर्स? द विनर्स आर who will get into the pit and slowly and gradually find his or her way to the other side of the pit. So good learners go into the pit.
अगर आप गड्ढा में उतरोगे नहीं, आपको कभी पता नहीं चलेगा गड्ढा कितना बड़ा है और बिल्कुल या तो बिल्कुल छोटा है। आपको पता ही नहीं है कि आप बहुत अच्छा से इसको पार कर सकते हो। सो गुड लर्नर्स ऑलवेज गो इनटू द पिट। हम लोग जब छोटे थे ना, मम्मी डेली सुबह उठ के कुछ एक पोएम बोलते थे, बहुत बहुत पॉपुलर पोएम था उस टाइम का। बोलते थे कि पानी में नहीं उतर के कोई स्विमिंग नहीं सीखता है, और जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं तो नहीं गिर के वो कभी चल नहीं पाएंगे। तो अगर कोई भी चीज आपको करना है, कोई भी चैलेंज को ओवरकम करना है, उसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा, उस चैलेंज को आपको लेना पड़ेगा। So what makes something stressful? Situations that have strong demands, situations that are imminent life transitions, timing that is deviation from the normal, ambiguity, desirability, and controllability. These are some common sources of stress. This slide we have already discussed a lot, the flight or fight response. When situations seem threatening to us, our bodies react quickly to supply protection by preparing to take action. This physiological reaction is known as the flight or fight. तो फ्लाइट मतलब भाग जाना, एंड फाइट मतलब उसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ लड़ना। सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द फाइट मोड एंड द फ्लाइट मोड। Now we have already discussed that not all stresses are bad. Distress is a continuous experience of feeling overwhelmed, oppressed, behind in our responsibilities. It is the all encompassing sense of beginning imposed upon by difficulties. Eustress kya hai? That is the thinking that the other form of stress, which is positive, which is beneficial, we may feel challenged, but the sources of the stress are opportunities actually that are meaningful to us. Eustress helps provide us with energy and motivation and self satisfaction and belief and trust in ourselves. What is stressful to you? I have told this can be different from different for different people. So that can be work, that can be your roommate, that can be legal matter, that can be a trauma, that can be the stress of getting married, that can be the stress of buying a house or something। एक्चुअली जो किसी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है वो और किसी के लिए बहुत नॉर्मल हो सकता है। ओके, सो स्ट्रेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। What are the suggestions for reducing stress? First of all, find a support system. Find someone to talk about your feeling and experiences. वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपका कॉलीग हो सकते हैं। किसी के साथ अगर आप अपना डर, अपना स्ट्रेस को डिस्कस कर सकते हो, तब that becomes a support system for you. Then you have to change your attitude. Find other ways to think about stressful situation. And this is very much true, is life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. जो होनी है उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कोई घटना घटने के बाद हम लोग कैसे रिएक्ट कर सकते हैं वो एक्चुअली हम लोग के जिंदगी को बदल देते हैं। So it is how we react to it. And nowadays, the people, the wise people, they tell that you don't have to react, you have to proact. Suggests for reducing stress, the third one is you be realistic. जब goal set करते हो ना, तो practical, goal should be practical.
गोल शुड बी अचीवेबल, जो आप अचीव कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल है। इस तरह का गोल सेट करो तो स्ट्रेस कम होगा। Then there are other suggestions for reducing stress. Get organized and take charge. जिंदगी में कुछ मिल नहीं रहा है तो आप क्यों मेरे चीज सही से नहीं रखे हो? ये किताब नहीं मिल रहा है, माँ आप कोई काम का नहीं हो, आप देख के नहीं रखते हो। टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। Whatever you need in your life, so all those things you have to control, you have to keep in order, and you have to get organized. And when your life is organized, your stress level will be much lesser. You see, any successful man, they are tremendously organized. I can see my husband in my home. इनकी इंजीनियरिंग के दिन का भी कोई किस बुक का, किस कॉपी का, किस पेज में क्या बुक मार्क दिया हुआ है, उनका उनको पता है. So this type of organized people, they are very seldom they get stressed out. The fifth one is take break. Give yourself me time. There are certain things in life which we enjoy. किसी के लिए गाना अच्छा लगता है, किसी के लिए किताब एक्स्ट्रा नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कोई और एक्टिविटी, किसी के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है. जो अच्छा लगता है कुछ एक ब्रेक लो और उसको करो, तो उससे क्या हो जाता है ना, आप रिफ्रेश हो जाते हो. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट प्रॉपरली, गेट रेगुलर रेस्ट. रात जागकर आप पढ़ रहे हो, रात जागकर आप लेसन प्लान कर रहे हो, बाकी जो काम के टाइम है उसमें आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हो या फोन पे बिजी हो, देन योर स्ट्रेस will never be under control. So if you want to reduce stress, you have to take good care of yourself. Then what are again told to you? What are the other suggestions? Learn to say no. बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है. कष्ट होता है ना बोलने में. मेरे साथ चलोगे, आप जानते हो आपके पास एक्स्ट्रा को और कोई काम है, आपको अभी जाना नहीं चाहिए, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू से नो. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. Remember, if you want to be successful in your life, if you want to have less stress, learn to say no. जो काम जब करना नहीं है, जो काम एथिकली आप सोचते हो आपसे नहीं होगा, जो काम आप सोचते हो आपको करना ही नहीं चाहिए बिकॉज टाइम नहीं है या तो और कोई कंस्ट्रेंट है, स्ट्रेट वे नो बोल देना बहुत अच्छा है. ठीक है? देन get regular exercise. Exercise are actually great stress busters. जब भी आपका स्ट्रेस होता है ना, आपका मसल भी स्टीफ हो जाते हैं, आपके पूरा पर्सनालिटी स्टीफ हो जाते हैं. नाउ व्हेन यू गो फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, एक तो है आपका मसल का स्टीफनेस, आपका शरीर का स्टीफनेस कम होता है, एंड उसके साथ आपका माइंड का भी, योर माइंड ऑल्सो becomes more and more flexible. Exercising regularly can help relieve some symptoms of depression and stress and help us to maintain our health. Even जो बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, जो बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रेस बनाते हैं दूसरे के लिए, उनको भी बोलो कि शाम को जाके 1 घंटा खेल के आओ. जितना स्ट्रेस है ना, वो पसीना के साथ निकल जाता है. देन गेट अ हॉबी, डू समथिंग डिफरेंट. जैसे जो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और जिसको लोनली फील होता है, फॉर अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल यू नीड टू प्रैक्टिस समथिंग न्यू. कोई हॉबी होना चाहिए. गार्डनिंग प्रैक्टिस करो, नया कुछ बजाना प्रैक्टिस करो, आर्ट सीखो, जो भी अच्छा लगे. यू नीड टू डू समथिंग टू गेट अ हॉबी फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस. देन स्लो डाउन. हमेशा टॉप स्पीड में चलिएगा, चाहे गाड़ी चलाते हो, चाहे जिंदगी को चलाते हो, ये कभी भी डिजायरेबल नहीं है. समटाइम्स यू नीड टू स्लो डाउन. नो योर लिमिट्स. कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ थिंग्स यू ट्राई टू डू ईच डे. डेली 1-2 चैलेंज काफी है. हमेशा चैलेंज लेते लेते आप अपने आप को बंदर बना दोगे, मोर सक्सेसफुल नहीं बना दोगे. So sometimes you need to slow down. And then, this is great, laugh and use humor.
जिंदगी में चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे बाकी जगह हो, अगर इफ यू टेक योर challenges with some humor, that will make your mood light and it will be easier to actually cope up with the stress or to manage the stress. Learn to relax, develop a regular relaxation routine, try yoga, meditation, or some simple quiet time. So relaxation exercises and this me times, these are also great. So at the end, we have come to the end of this and we are going to finish this off with a wonderful poem. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिश जारी रख कुछ कर कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा. नमस्कार. Thank you very much. Now, anyone who has any doubt into this? Any doubts? Hello? People are leaving. Okay. They are not in a mood to ask anything. Okay. So, thank you very much, ma'am. You have again enlightened us with your excellent. Thank you for giving me this challenge. Yeah, it was. I'm very, very sorry that I intimated you at last moment, and you have done it excellently well. The other thing is, we'll keep disturbing you this way. Of course. एक्चुअली जिंदगी में अपने आप को भी डिस्कवर करना बहुत जरूरी है. Yes. अगर अपने आप को चैलेंज नहीं देते हो तो आप नहीं जानते हो आपका एबिलिटी कितना तक है. Oh, that was your punchline was today you got a stress for the training. So we have already shared the link for marking your feedback. So please do that. The timing is up to 4:15 p.m. itself. So thank you very much on behalf of Aryavat Saurya School Complex, your resource person Rama Chakravarti ma'am. And with this, we can leave. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you, sir.